202, 206, 209 ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना वो हम अंडरलाइन कर लें। जी, लाइन 5 पढ़ लिया जी। लाइन 5, the penal clause i subsection 5 of section 215 envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR Calcutta Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter. Rather, its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आगे आके इसकी quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है। फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, referred to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. G. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. एक सेकंड जी, will you agree with this? जी. Suppose you give a certain thing manifesto. So the government of the political party so formed must implement the program of the political party. कोई manifesto की बात नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree वो judgment दे रहे हैं कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे. ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए. It's like a wish. God cannot direct. Suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए, फॉर इंस्टेंस आपके मैनिफेस्टो में लिख दें, गॉड कांट डायरेक्ट यू, पार्लियामेंट कैन चेंज लॉज इफ वांट्स टू. करेक्ट, बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द जुरिसडिक्शन इज नॉट देयर. सो आई वुड सपोर्ट दिस जजमेंट. एंड आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड इन 10 only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. जी, as a parliamentarian you would not want that to that can be changed. बाकी बिल्कुल ठीक है. चलें जी. अच्छा सर, बिफोर आई एंड एक दो जस्ट द कॉन्सेप्ट कि एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया. जस्ट द कॉन्सेप्ट, एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट. उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की. सो ही वाज गोइंग टू बी अवे. तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल.
तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन. So one of the grounds taken was कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया is not the Advocate General, he is somebody else. तो कोर्ट ने कहा कि show us the prejudice that was caused because of him not being a Advocate General. तो अगर वो prejudice नहीं है तो there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who've not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड. Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, हमें आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ें कैसे? जी, वो ये कहते हैं. उनका तो और भी बुनियादी. लेकिन मेरा अभी मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या. Correct. क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते. That point is conceded. But nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ. और ये judgments हैं, कुछ judgments मैं quote करना चाहूंगा your lordship में say पॉइंट्स different things. किस पॉइंट पे? इसी पॉइंट पे कि there's a concept of de facto, something happening de facto. कि अपॉइंटमेंट्स गलत भी हों तो जो ऑर्डर्स पास हो गए हों या एक्शंस हो गए हों वो नलिफाई नहीं होते. ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना? जी हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूंगी. इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहां जजेस अपॉइंट गलत हो जाए और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है. जी जी अली वो वाला दो ज्यादा जजेस के वो जी जी वो फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, अब वो तो सेटल प्रिंसिपल है. तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आपके आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल? वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं? टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस. तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना. आई हैव नो इशू. अच्छा ओके ऐसी आई हैव नो इशू. ठीक चलो, अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम बेसिकली खत्म आई एम खत्म जी. I hope you're not खत्म. अच्छा वो आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बुलाए उनको. तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is. Whatever, Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था. और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप. ठीक है. और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है. So this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे ये बताइए. लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, so they were returned. No, मगर वो कौन है proclaimed offender? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, he must have that. कौन सा थाना है? कोसार. आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए. और
associate Gaur Saab or his wife or whoever is at the home, तो आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है? This is a very serious matter. देखें, You understand? every citizen has to have full protection. Lordship. ठीक है? Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? Gaur Saab, would you like to go with Raid him हुई now, है? or you Yes, want? ma'am. हाँ? रेड हुई है? जी योर ऑनर। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ, ठीक है, लॉर्ड। इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए, जी सर। आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए, एंड इफ गौर साहब इज नॉट सेटिस्फाइड देन Hamid Khan साहब, you can convey the thing or he can directly, so it would be better अगर आप कर लें, ठीक है? तो ठीक, Lordship. anything else गौर साहब? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, प्लीज go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority order of business. Lordship. Thank you very much for coming into this. No, actually, I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for, I mean, I don't know what's happening. So I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. So, I mean, no point telling the AG he won't know anything. जी. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. Makhdoom Ali Khan, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं, उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ? You only represent one. नंबर के लिए बुला लेना। अच्छा, 5 लोग in person हैं. अच्छा, sorry, आप, अच्छा, you wanted to add something, जी. Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that your lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was, हाँ साहब, थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't इस worry. केस को कुछ We have not taken any, मतलब, let's चलिए आप केस पे बात जनरल करें. परसेप्शन की बात नहीं, कर रहा हूं। केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था। The 2 places हाँ इस्लामाबाद। साहब, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. नहीं सर, बात तो मेरी मुकम्मल कर लेने। उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुंचाऊं। Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. नहीं, मगर Not a sample. खान साहब, आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं, तो अगर आपकी बात ये बात है, तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो? फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं। तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में। इसलिए अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना। अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो? तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहां सिक्योरिटी देते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं। नहीं, मैंने कहा जब आपने जब बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे। जी जी जी, चलिए we still have a duty to चलिए, let's proceed with the notice case. to them. Secondly, We can't provide every remedy in the world, but we can Why attend to did the we case. choose- जी, why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी, देता हूँ। Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब, They केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना। अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया, तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में। सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स नहीं आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है। मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, why we preferred, because
the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनके डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। मगर ये देखिए बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई। 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट लाहौर व्हिच यूजुअली इज 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच। तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए। इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात। सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं। मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच। वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंट्रा कोर्ट अपील में वो अपील्ड हो गया है। हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है। नहीं, अब आज भी जिंदा है केस, पेंडिंग पड़ा है। कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the High Court, Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था, ये हम सब गुजरे स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भी jurisdiction खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी। देखिए we've all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने jurisdiction का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इम्पोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBR is based in इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली jurisdiction। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP, being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see, 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the higher court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not So be, if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but
Would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and separate jurisdiction is under Article 199. So though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. I was the petitioner, here they are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. Yes, another party aggrieved can come home. ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है, ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है, ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 मेंबर, very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी. वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का, वो जी सर, वो वाले आपने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना चाहिए वो तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, that PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही 2 जज. हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटीशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो, कि आपके इधर से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकती. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. दे दीजिए. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी तो 4 मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी सब नए वाले जो कह रहे हैं वो संस्कृत है, इसके जो दे रहे थे ना ये बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कोई पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अहमद अली वाला केस. हाँ, तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन. नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता है. Another 5 minutes I'll provide. आप पढ़ने जी सर, पढ़ने देता हूँ. पढ़ लीजिए. The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141.
The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Was out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment is neither case. सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग इस वक्त जारी है। हामिद खान दलाल दे रहे हैं। एक आम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान न दें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइए आपके पास डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने अपना बाकायदा ऑर्डर जारी किया जिससे चारों मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दस्तखत हैं, जिसमें कहा गया है कि अक्सर उम्मीदवारों की जानिब से दरखास्तें मौसूल हुई जिन दरखास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन हुक्म देता है कि कोई इंतखाबी निशान किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को ना दिया जाए। जो उम्मीदवार किसी और जमात का मेंबर हो और दूसरी जमात का निशान मांगे वो ना दिया जाए, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में। और आरओ ऐसे किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरी इंतखाबी जो है निशान ना दे। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। एक शख्स एक वक्त में एक से जायद पार्टी का रुकन नहीं हो सकता, ये इलेक्शन एक्ट में कहा गया है इलेक्शन कमीशन के इस हुक्मनामे में, जिसके तहत अब इलेक्शन कमीशन ने आरओ को कह दिया है कि वो किसी और जमात के रुकन को किसी और जमात का टिकट इंतखाबी निशान ना दे। जी अच्छा नौशीन, ये बताइएगा, ये इस बारे में कुछ क्लैरिटी है कि रिटर्निंग ऑफिसर को कैसे पता होगा ये कि किस जमात का रुकन था और दूसरी जमात का वो इंतखाबी निशान ले रहा है? बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन जब आप रिटर्निंग ऑफिसर्स आते हैं तो वो जमा कराते हैं। हर उम्मीदवार जो होता है वो अपनी एफिडेविट जमा कराता है, बताता है कि उसकी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्तगी है और वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करते वक्त भी अपनी पार्टी की वाबस्तगी जो है उसकी सामने होती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकाम हैं कि एक पार्टी का जो रुकन होता है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही जमात का रुकन हो सकता है, दूसरी जमात का रुकन नहीं हो सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जो अगर किसी और जमात का रुकन है और वो किसी और जमात की जानिब से आकर आपके पास अपना किसी और जमात का टिकट जमा करा रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने से मना कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर्स को। जी सही है। और अगर कोई किसी जमात का, जैसे आपने कहा कि कागजात जमा कराते वक्त वो बताया जाता है, तो अगर बाद में वो फैसला करे कि आज़ाद हैसियत से लड़ना चाह रहा है तो वो भी नहीं हो सकता? आजाद हैसियत तो अलग है, उसके लिए तो अलग इंतखाबी निशान होते हैं जो आजाद हैसियत से होते हैं। लेकिन नौशीन हमें डिटेल्स दे रही थी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान ना दें। और ये कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये हुक्मनामा तब आया है जब कुछ ही देर पहले हमने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती से अपने उम्मीदवारों को कहा है कि वो आरओस के पास जाएं और नज़रियाती जो कि बल्लेबाज का निशान है वो हासिल करें, तो उस पर यह इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले से मुताल्लिक समाअत जारी है। एक बार फिर लिए चलते हैं आपको। Before the 18th amendment, Let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं। उस पर मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें। मैं उसके एंड पर बात करूंगा। मैं इसलिए आखिर पे सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17
उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के। पढ़ ली 17th prior to 2010, before Every political party shall, subject to law, hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही। अब ये खत्म हो गई है। every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted under the 18th But Amendment. it was brought back by 207 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act, or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore, my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का। वो एक उनके सेक्शंस में है, तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए। देखिए वो एक और एस्पेक्ट है, बिल्कुल वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली जफर, it has no jurisdiction. But the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore, my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Yes. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. Lordship, kindly consider Article 219. So. Read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, आप पॉइंट बताएं। This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं। जी सर। अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs
And with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first four clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body, it is performing that function. So, under Article 219, any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ईसीपी की कदर नहीं कर रहे proviso, नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220. it shall be the duty of all executive authorities in the federation and the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में, all executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by election commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. As per 220 is not with regard to functions, is with regard to. But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए. Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं. बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही तब सकती है. इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर. Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. मगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है. कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, but E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे हैं, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को. ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना. ये मुझे I can't, ये आप कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं. Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना. So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं. अली जफर साहब ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं. Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूँ. Partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book.
pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की petition में there we have clearly taken the position वो of बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. खुद ECP ने लगाए हैं, उन्होंने खुद ही लगाए। ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है, आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये। और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है। जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है, और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है। हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया और ना हाई कोर्ट ने उसमें कोई फाइंडिंग दी। नहीं, कई चीजें जो हैं सर, दिस इज ग्राउंड W on page 49. 49 Page 49. ग्राउंड W W आप पढ़ लें। और of the first paper book 1. हाँ, I read it out that it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं, एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी, फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात। फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन तो ये आपका कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहाँ पर पिटीशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ECP पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है, और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई। आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी, तो मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो? बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे। बिल्कुल सही नहीं लिया आपने, कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत इतने साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराया, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है अभी देखिए इलेक्शन, ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था? जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था
इसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से? ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, कब की बात है वो? ये 2012-13। तो देखिए, अब ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूद्दीन साहब को कि आप ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, वो हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी। बहुत नो, बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए, सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, you know, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी तो कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम, इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सनल। सर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास्ड, द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं, और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो। वो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी, वो जो 2017 के लॉ के, तो इसका देखिए, अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी, क्या करेंगे? खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर a party is a वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, why are you afraid of your own members? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं कह रहे हमारे दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ? नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। In this case, Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर के जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा, ये खत्म ही हो गया ना। पॉलिटिकल पार्टी को अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें? पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन? अगर ये बात है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है, basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाए, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की। Then in future no political party will be subject to the inter-party election.
The law, it says, and the bodies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है, जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी, अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया, ये नई बात होती है, मैं जरूर लिखता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स। जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। हामिद खान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दलाइल दे रहे हैं और कंक्लूडिंग ये दलाइल हैं हामिद खान की तरफ से। आम खबर यह है कि IG इस्लामाबाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर बैरिस्टर गौहर के घर पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया था IG इस्लामाबाद को कि बैरिस्टर गौहर को साथ लेकर जाएं, उनको मुतमईन करें, तो अब वो घर पहुंच गए हैं IG इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर के साथ। हैदर शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। हैदर, बताइए डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, इस हवाले से आज दोपहर के वक्त बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बताया था कि उनके घर पे छापा मारा गया है, उनके बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया, घर वालों को हरासा किया गया। जिसके बाद IG इस्लामाबाद को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर के घर भेजा था कि बैरिस्टर गौहर IG इस्लामाबाद के हमरा वहां पहुंचे, और अभी थोड़ी देर कबल IG इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचे और बैरिस्टर गौहर ने IG को अपने घर के अंदर जो पुलिस की जानिब से जिस वक्त ये तलाशी लेने का मामला चल रहा था, उस वक्त जो तोड़फोड़ की गई और वहां से सामान जो उठाकर वो लेके गए, वहां तमाम एविडेंस बैरिस्टर गौहर ने IG इस्लामाबाद को दिए। IG इस्लामाबाद ने इस मौका पर बैरिस्टर गौहर को बताया कि वो ये तमाम वाक़े की खुद तहकीकात अब करेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि आपको मुतमईन किया जाए, लेकिन ये बड़ा ही खौफनाक मनाजर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद ने इस बात को तस्लीम किया कि यहाँ जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद और बैरिस्टर गौहर इस वक्त मौजूद हैं, दोनों बैरिस्टर गौहर के घर पर, और जो सारा मामला हुआ था इससे मुतालिक बैरिस्टर गौहर उनको बता भी रहे हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, आपको समाअत अभी जारी है। बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, देयर कैन बी अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agree. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है। यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए। अच्छा, एक इलेक्शन कराने की इजाजत। एक मिनट रुक जाइए। जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, ANP कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? नहीं, देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना। जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी, उधर उन्हें को बगैर फाइन के आपको कर दिया। फिर आप ये भी ANP का लिखेगी कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंस। आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर, आज की बात नहीं है। जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना, अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या PDM आ गए या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं। मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त में टाइम दे दें। हाँ, तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, अब आपको थ्रेट भी दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा। वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था। मगर आप लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो फिर exercising powers in a discriminatory manner. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया, इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहा है? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. वो we got it. आगे बढ़ते हैं। So ये मेरा कम पॉइंट नोट फरमाइएगा। discriminatory treatment. This party not equally
and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं आप मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. मैं एक दफा contest किया है, and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात है, मैं इसलिए बात वो अपनी पर्सन की नहीं बात करता. Now, sir, next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but covered this ground. It is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mia Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections, and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199, 1B, 1A, तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगली. ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर जी, तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने. आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It says that in law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ye hai there. I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. If इसमें clause 2, declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province, and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect.
So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that by अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province. They'll say we don't do this either. We don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if you go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we're not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But देखिए ना, declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है इसका. How does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was they've conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction, but having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your Lordship's impression. Nothing more I have to say about it. Sir, खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें. बस जल्दी कर देता हूँ. अब बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी. My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो. आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज. जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ. राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट कोई डिनाई नहीं कर रहा है. आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है. वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा. राइट तो अभी है ना कि अगर he was entitled to that, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल. Why a person's ECP is taking so seriously somebody's complaint in the internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Leadership. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your Lordship's time. ECP, time you may take, but then you may suffer the consequences. Your Lordship you want to suffer the consequences. I should conclude early so that. Jeez. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again. But ये allegation आपने नहीं लगाया. देखिए ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody, making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who
want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed it's under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, इस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं, बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर turns against his party, तो क्या वो पार्टी ये नहीं है, देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी तो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority, but subsequently with a lapse of time they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नहीं केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए आपने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए नो, आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलिए तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. Challenge not us. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party. मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against this party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे. मैं मेराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था. He was a founding member of PPP, but he had differences
in 1972. तो आपकी पार्टी में आ गए ना? He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए हैं ना, अब ये फौजिया कसूरी साहिबा है या चली गई हैं? तो देखिए, जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में, कम से कम आप उनको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्यों एक तो इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है, इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, ये बात बार बार सुन चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल आगे खान साहब भी वर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, तो सिंबल वाली हमने बात सुन ली। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें। 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का, कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, अब कब मना कर रहे हैं? अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए उसके तहत। सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको। क्यों छोड़े हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है। अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को। सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, then he would have been a petitioner that he has been expelled. दिखाइए ना, मैंने ये एक्सपेल किया हुआ वो है। तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आपके कहने से बस काफी है। काफी है। पार्टी से नहीं, अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट टर्मिनेशन। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable Azab, if you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my No, you should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूंगा। No, you don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party होकर को मैं ही डिनाई कर रहा हूँ, तो देखिए सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा। ये चलिए खैर आगे बढ़े। We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली। Next point The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी, do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस में 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो, आज बाय दिस एक्ट ऑफ ACP दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 7। साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना, ठीक है ना। आप कोई अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को, इसको आर्टिकल 2A के तहत भी देखें ना, हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की, ठीक है लेकिन मुझे भी पढ़ लेने थे। पढ़े मगर टाइम की बात है। फिर 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है। सर इसमें ये कहा है wherein the state wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी परहैप्स बहुत बड़ी फॉलोइंग है उसको इलेक्शन से बाहर कर देंगे तो फिर उस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत सारे फारिग हो गए। नतीजा क्या है ऐसे इलेक्शन का जिसमें एक पॉपुलर पार्टी विद फॉलोइंग is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives the
and deprives millions of vote of their follower. चले Even सर, ये for बात 10 हो, मिलियन वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना जी। अब ये हमने नोटेड इट मेनी टाइम्स. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँगा. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the constitution is equally a legal and a political document. जी. So no court, while interpreting the constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as which will render the election and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and these consequences of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Musica's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी. लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? Believe क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representative spot number. हुआ था others in person. Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगे ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको कमीशन आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकेंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या है? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाया. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सूबा इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से. MPA स्वाभिमान से. स्वाभिमान से. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है. तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरी. भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए. मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे, हमने उनसे मालूमात चाहिए. हमसे पहले भी उधर लोग
अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उस किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाहते। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं रिस्पोंडेंट है पीटीआई में 2006। महमूद अहमद खान जी। जी, मैं 2006 से पीटीआई में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद पीटीआई इस्लामाबाद जी ऑफिस। एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आई हैव सब आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? May I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. कोऑर्डिनेटर। तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? पीटीआई में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। दैट इज पीटीआई असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे और लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा, लेकिन देयर वाज नो नॉमिनेशन इंफॉर्मेशन। पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं, इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। We want democracy in the country, and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, वो आप भी बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रिस्पोंडेंट है? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ। मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। Then afterwards, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब he was died 2 years back। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान। तो I used to assist him in the central office as his executive assistant। Central office executive assistant to chief of Mr. नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के till he was the prime minister till he died। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब he was managing time of इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया,
और उमर अता बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे डीर अपर डीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी, पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले, वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? नो, अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है। ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नेमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ PTI, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलिए और कौन साहब हैं? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक। जी, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? पार्टी मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, उसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी जाऊ में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने बात। अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस, और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि उसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं जिसमें लोग PTI में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था, और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक। और कौन रह गए? सब हो गए? जी, मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से, चक नंबर 312 गांव से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना UC 81 से, टोबा टेक सिंह से। UC 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था PTI का सर। और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में PTI की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के।
आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव बेस। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ा है? जनरल इलेक्शन? यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दांडी से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में ज्वाइन इन 2016। आप किस पार्टी में? आप सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पे जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलिए ठीक है, ओके। My lord, may I make short submissions on Very behalf of the short. board? Very short. I'll be as brief as I. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171 जी. As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें Constitution of PTI की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 are no longer with us. With us, meaning they've passed away. अच्छा. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left. Party. Ji. Only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They've left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active in the party. I believe he's still in the party. Ji, bilkul. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, ji. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to No, why are you showing its relevance? To demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी, पहले ये बात की है जी। आई डू नॉट हैव
have the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है पेज 58 जी ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त रीड आई कांट सी योर नेम रीड इट जी इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल इसमें ऑथराइजेशन है माय अपॉलॉजीज जी इमरान खान साहब का सिग्नेचर है और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं और इसके आगे मैं आपका नाम कहाँ जी मैं वो एनेक्स में है वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी मुझे ऑथराइज पार्टी कब बनी कौन से साल में पार्टी तो जी मिड 90s में बनी ये आइन जो है 99 में आया और ये जो ये 2002 में क्यों आ रहा है पहले क्या सिंबल था I'll have to get instruction on that. ठीक है तो ये 61 हो गया और कोई बात जी और इसमें मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे कि जब शो कॉज देना होता है तो किस तरह शो कॉज दिया जाता है पेज 63 पे चलिए खैर वो तो अलग बात है और उससे जो आखिरी किसको शो कॉज दिया है दिस शो कॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान क्यों He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malafide. Whereas you are hereby charged जी इसमें जो मैं जो ये कब की बात है this is December 1 2019 इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to this show cause notice और on page 65 I just want to read one line This is 64 से पढ़ लेना will not quit party under any मैं उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था so दुख की ये बात है कि a different measure a different standard a different argument is being presented for a co-founder this is very painful to observe इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं 65 ये जी कि let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances so why is there a different measure of the application the interpretation of the law of Akbar S. Babar he has made it clear over the years he is not going to quit the party if you want to turn him out follow the law give a show cause notice let him defend it turn him out he is bound like I show cause notice का क्या बना I have जो पब्लिक नॉलेज है जी खान साहब ने आगे बढ़े जी उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं ये वो जजमेंट्स हैं एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं पार्टी इसको कंट्रोवर्ट नहीं कर सकी इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब सिर्फ वो जुमला बता दें जी मैं उस पे इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है इसकी शिकायत मत वसूल करो तो ये we went to the whole membership story multiple times and here where is it held that you're a member जी in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 page बताइए page 71 तो ये 10 से शुरू होता है जी 11 में भी इसका डिस्कशन है और 13 पे आ जाता हूँ 73 पे टू कट इट शॉर्ट
paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की? There was an ICA, and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, रिट होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी फाइल कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगा. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से क्या बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके client हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी पूछ लें. मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने सामने लिया है. नहीं उसको जरा ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया. उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया. एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है of the documents. और कोई बात? जी सर. ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी. तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बिल्कुल. वो फिर ये कह मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस. Page 220. अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं हैं. ये गलत है. आप बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें. तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना. जी बिल्कुल. तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज. आपसे जो गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज, उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? जी. पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231.
Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाजे है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे, बट अभी मे बी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूँ। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. तो ये इसी में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना पीटीआई के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them on our books? जी page 100 of the petition, page 100. जी जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल, 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट। आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी।
अब बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हमें हम अवॉइड कर रहे हैं चीजें जी। 171 में क्या है ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटिशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की, उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी। I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था। ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन। ये जो पिटिशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूँ। बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि वन, ये कौन है आपके साथ जो खड़े? my colleague Badr, he's been very kind and helpful and also he's not neither kind nor helpful because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटिशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटिशन फाइल की। वो एक्चुअली tells me, वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें और चेक तो कर लें। जी, बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटिशन है, बट नहीं वो पिटिशन पेशावर में फर्स्ट है। उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटिशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी, ऐसा नहीं। जो मैं Sorry, was on a lighter note था। I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया। सर्टिफिकेट में नहीं है, 20 सर्टिफिकेट में पैराग्राफ 20 में एक सेकंड, नहीं पेज बता दें पिटिशन का पहले। पेज 38 कैंसिलेशन मेंबरशिप Paragraph 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitions filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019, and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmitted its result along with all required documents including form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे ख्याल अगर क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. mention किया। Page 50 पे देखेंगे जनाब certificate. Lordship, I've just received page 50. Page 50 पे जो certificate है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court. वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ एट पेज 602 पे जनाब फैसला इसका, इसकी पिटीशन लिखी थी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज है? 602 पेज पढ़ता हूँ। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act.
2017 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case, and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटीशन भी बता दें किस पेज पे है? पिटीशन वाज 585 सर। जो नहीं इसका ये जो 11 इसमें आई श्योर। अच्छा अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटीशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब Issuance on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. आगे it's missing language sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other points? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify. PTI, Pakistan. PTI Constitution. Achha. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बताता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. Apologies. I think there's a. लास्ट 2 पॉइंट्स सर, प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर, और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says एक
a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या affiliation एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? I am now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं जी, general elections. I've not understood the point. Sorry, it was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाजे है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the, I cannot answer that. लेकिन एक और सवाल में जब Badr was kind to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाजे प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी. ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से. खैर ये तो ओके. और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सबसेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट. बाकी अटेंडेंस. और इसी तरह से सब सेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं. The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you. Thank you. किधर है? जी सर, आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से. पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले. किसका? 2002 में PTI का सिंबल की जो बात हो रही है. ओके. जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था, तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था. So he's earned his keep. Always more than grateful. Thank you. Eat anything, my lord. You just want to right of reply is restricted to the points other side is raised, including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly,
May I just hand over a few notes of chronology first? My lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your lordship's time. Ansab ko bhi dijiye. Ji. I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं. ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें. My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी. They have been. आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, बट 13. सबूत है 13 की. 13 का सर, there is an order. There is an order. 13 का. नहीं, एक तो हमने खुद देखा था, ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल Pakistan Muslim League. Just place a copy of the order before your lordship. They are all being done by one order or 13 order? By one order. ये order हमें दिखा दें. जी सर. So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों. इसी कल लिखा. Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. नाम तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे. If your lordship will see after the name of the parties, your lordship see on commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, all Pakistan. कुछ और आपने हमें दे दिया, इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? क्या दिया? ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, the order dated 4th of January 2024. इधर कितने पार्टीज के नाम? Sir, if your lordship see the heading on commission's notice, and then your lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं, ये अच्छा अभी ये कुछ और गया था. अच्छा ये वाला है. अच्छा ओके, गॉट इट. PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है. अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन के दलाइल इसमें मुकम्मल हो गए हैं. आम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से PTI नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा कराने के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है. PTI ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करके इस्तदा की है कि PTI उम्मीदवारों को जारी तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट मंजूर किए जाए. PTI की इस्तदा के हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से. जी नौशीन. इनकी जानिब से जमा जो कराई गई है दरखास्त इलेक्शन कमीशन में, उसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों को जो हमने जारी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट, उन्हें मंजूर किया जाए. हमारे उम्मीदवारों को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है. इलेक्शन कमीशन इस मामले पर और उसको जो है वो जरूरी हिदायत जारी करे, ये कहा है शुएब शाहीन ने इस दरखास्त में. और इससे पहले आपने बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि कोई भी अगर PTI नजरियाती का यानी जाए वहां पर, तो उसे कहा जाए कि आप क्योंकि बल्ले के नाम पे रजिस्टर हुए हैं तो फिर आपको ना दिया जाए PTI नजरियाती का. जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया बाकायदा, जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान की दस्तखत हैं, जिसमें कहा गया है कि एक शख्स जो है वो एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता और आरोज ऐसी किसी भी जमात के उम्मीदवार जो है उसको दूसरी जमात का इंतखाबी निशान जो है वो नहीं दे. और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्मनामे में यह भी कहा है कि अक्सर उम्मीदवारों की जानिब से दरखास्तें मौसूल हुई हैं, इन दरखास्तों के जरिए से इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है. अब ये देखना होगा कि PTI की इस दरखास्त को रद्द किया जाता है या इसको तस्लीम किया जाता है, उनको इजाजत दी जाती है या नहीं. बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ. एक और अहम अपडेट, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं. ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के ज़िला मीर अली में ऑपरेशन और मीर अली में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं. मीर अली ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कादिर मान और दहशतगर्द साजिद उर्फ सरकंडी हलाक हो गया है.
सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरा ऑपरेशन डीआई खान के इलाके कोलाची में किया है। आईएसपीआर के मुताबिक कोलाची में होने वाले ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक किए गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के ज़िला मीर अली में ऑपरेशन किया। मीर अली में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मीर अली ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कादिरमान और दहशतगर्द साजिद उर्फ सरकंडी हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरा ऑपरेशन डीआई खान के इलाके कोलाची में किया। कोलाची में होने वाले ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, आईएसपीआर का बताना है। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। It would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with 2 orders. And this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara bata dein. Yes, sir. This is, my lord, PLD 2008 Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation. PLD 2008 Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document. जी. We have given. वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology, my lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship you want knows to the launch reason. an attack, or you were drawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in 1 paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord.
The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10. And I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord, in a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here, they are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct and they say if the commission had jurisdiction, that's the end of the matter. My lord, your lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion and I move on, if your lordship may then move on to the next relevant paragraph which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your lordship that it is and how it is. What is the reason given? My lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your lordship, that was a fact which was before them. जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है जी वो पिटिशन का क्या नंबर है 287 that's the one they engage with 287 पहले फाइल हुई थी या 287 is subsequent what was earlier was 81171 they don't mention that at all क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटिशन जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है बट under your according to your lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case they were obliged to deal with that petition नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटिशन थी लाहौर वाली क्योंकि या अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटिशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता absolutely correct my lord and that was pointed out to them in oral submissions and that was okay वो अब आप देखिए ना अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो उन्होंने पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया that's correct my lord जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है maybe को ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर that's correct my lord that's correct क्योंकि अगर वो नंबर दे देते तो फिर तो बात कॉन्शियस डिसीजन हो गया if I was a judge I could have also committed the same mistake ये तो हो गया क्योंकि पहले वाले इधर आए थे ये I don't know नंबर उधर नहीं लिखा उधर my lord so far as my instructions are concerned the council appearing for the Election Commission of Pakistan in his submissions had provided the number but the record over here in terms of the judgment doesn't disclose it my lord if your lordship turns to page 18 now the question is identified in paragraph 19 the question is identified and that's highlighted the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question probe and adjudicate the intra-party election dispute of procedural impropriety in the matter in the election process of a political party. Then the last 3 lines, the verbiage of section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of the section 209 of the Election Act that a political party shall within 7 days from the completion of intra-party election submit a certificate signed by office. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of commission to publish the set. वही बात हो रही है उन्होंने कहा सर्टिफिकेट आ गया बस बाकी That's it. So they say we do not need to go. आपका कहना है कि सर्टिफिकेट तो is a culmination of things. Yes. In fact, even things follow.
उनका कहना है ये नहीं सर्टिफिकेट आ गया, आप हमारी इंटरनल मामलों में झांके मत। जी सर। Sir, if that were the case, then the ECP really has no power under 215(5) to take any action in any case at all, because all that is required is a certificate signed by the party that we have held an election and following are our office bearers. Whether the election has been held validly, constitutionally, in accordance with their constitution. एक सवाल रह गया सर, ये जो कंप्लेंट आपके पास आई 14 कंप्लेंट्स, माय लॉर्ड, पहली दफा जो आपने नोटिस दिया था 2021 में, वो भी कंप्लेंट्स आई थी या वो आपने भेजा था कि इलेक्शन का टाइम हो गया है? सर, we had very initially we had 2021 very initially we had ourselves written to them without any complaints. We had written इस दफा कंप्लेंट्स आई। जी सर, we had डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं। सर, that's correct sir। ठीक, so can you say there's different lists than the Lahore High Court, because the lists in Lahore High Court pertained to not holding of elections and the list in Peshawar High Court pertains to not holding of proper elections? My lord, can you distinguish them or no? My lord, on the 2021 show cause notice, there was no list. They said, give us time, give us 1 year. We gave them 1 year. The list started with the order of the Election Commission of 23rd June, where on the basis of complaints and on its own findings, the Commission said that this 23rd जून का ऑर्डर उन्होंने कहाँ चैलेंज किया? उन्होंने वो ऑर्डर जो है वो लाहौर में चैलेंज किया। That's WP 81171, जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी। पेंडिंग है अभी, वो पेंडिंग है। तो मुझे अगर कल वो अगर उसको मान लेते हैं इनकी बात। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है, अहम तरीन समाअत है और अहम खबर यह है कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्रर वक्त खत्म हो गया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्रर वक्त खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी नहीं होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्रर वक्त खत्म हो गया है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त समाअत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी फैसला होना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से वक्त ख़त्म हो गया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्रर वक्त ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़े कर दिया है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मज़ीद तोसी नहीं होगी। और इससे पहले यह भी खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जो इंतखाबी निशान है उस पर अपने उम्मीदवारों को कहा था, कौमी और सूबाई असम्बली को, कि वो जाएं और आरोज के पास और बल्लेबाज का निशान उसके लिए अप्लाई कर दें। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये नहीं हो सकता और ये धोखाधही में आएगा, क्योंकि पहले जब एक चीज़ हो चुकी है बल्ले के निशान पर, जो जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, तो अब वो निशान अगर अपना चेंज करना चाहते हैं, दूसरा निशान लेना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक नहीं होगा और इसको ना किया जाए। आरोज को ये हिदायत की थी। इससे मुताल्लिक एक दरख्वास्त भी PTI ने दी थी और इसी असना में जो वक्त था 7 बजे का वो ख़त्म हो गया। इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्रर वक्त है 7 बजे तक का, ये वक्त ख़त्म हो चुका है और इसमें मज़ीद तोसी भी नहीं होगी। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने वापस दिया था, उसके खिलाफ एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और उसी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील भी अपने दलाइल दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी अपने दलाइल दिए हैं, दूसरी तरफ अकबर बाबर के वकील ने भी अपने दलाइल दिए हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्रर वक्त आज शाम 7 बजे तक था और ये वक्त अब ख़त्म हो चुका है और इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मज़ीद तोसी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की है कि रिटर्निंग अफसरान किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान न दें। इलेक्शन कमीशन का ये हुक्मनामा PTI का प्लान B सामने के बाद जारी किया गया है। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा है कि एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। ये इससे पहले खबर आई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान B पर अमल करना शुरू किया था और बल्लेबाज के निशान के लिए अपने उम्मीदवारों को कहा था कि वो
जाएं और बल्लेबाज का निशान लें, तो इस पर वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी की थी रिटर्निंग अफसरान को कि किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान न दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्मनामा PTI के प्लान B के सामने आने के बाद जारी किया था और उसमें यह वजाहत की गई थी इस हुक्मनामे में कि इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता और ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। वक्त ख़त्म हो चुका है उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का और इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर यह भी बता दिया है कि इस वक्त में तोसी भी नहीं की जाएगी। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of absurd provision of law. My lord, if find that word very offensive. My lord, this honorable court and the high courts can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means if it was striking it down, it could be held. Yes, maybe. Yes, my lord. Yes. Not very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking it down, not to follow it on the basis that it is absurd, means that they have not found it in violation of the constitution, because if they did, then they should have struck it down. Yes. But if they did not, then they have to follow it. The High Court has to apply the law then. It can't simply walk away from the law saying it's absurd. ठीक है, ये आप वो कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक इनबिल्ट implied term है, उसका क्या कहेंगे आप? My lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party or secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That would be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला और इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप इनसे कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, तो क्या वजूहत हो सकती है कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे? My lord, I mean, I know it's a realm of speculation. If you don't want to speculate, fine. My lord, I would hesitate from speculating. I would move away. My lord, our respectful submission in respect of these. ये रघु साहब ये रोमन 3 में इन्होंने जाके फिर उसका इफेक्ट दे दिया खुद ही 215 का, ये क्या है फिर? Sir, our submission with respect is that is the inherent contradiction which my lord the Chief Justice was pointing out as well on page 26. If 215(5) is an absurd law, then how can a writ be issued strictly and is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217, read with any other enabling provision of the Election Act? So if this is an absurd piece of legislation, if no action can be taken on the basis of this legislation by the ECP, what is the basis of the honorable judges of the High Court to issue a writ on the basis of that same absurd provision of law? Unless subsection 5 is struck down. Unless the provision has been. My lord, if subsection 5
5 had been struck down, then the scope of controversy before this honorable court and submissions would have been entirely different. But over here, the situation is that it is not struck down. It remains on the statute book. It remains as a valid piece of legislation on the statute book, but for all effects and purposes, it is made redundant. It is your lordship's consistent jurisprudence that no piece of legislation would be regarded as redundant. Your lordship can declare it as unconstitutional and therefore void, but your lordship cannot declare it as absurd and redundant. That's the respectful submission. That's the line of distinction I draw between a provision of the law which is in violation of the Constitution and therefore for all practical purposes doesn't exist. Noted. And the one which exists, which has been made redundant. My lord, those were all the submissions that we had to make. Do you find those orders or no? 11, 12, my lord, one of the orders, that's page 302, part 2. जी My lord, that is at page 302. Your lordship will say interim relief notice for 19th. Meanwhile, the respondent ECP is directed to continue. Yes. Continue. The earlier petition will continue with the proceedings pursuant to the impugned notice. However, no final order shall be passed against the petitioners. Then, if your lordship will see page 308. As the main case has already been fixed for hearing on 19th of December, therefore notice of CM be given to respondents for the date fixed. In the meanwhile, the petitioners are directed to appear before the Election Commission of Pakistan pursuant to the notice dated 8th of December 2023. However, the respondent shall not pass any adverse order against the petitioners. What were they required to appear for then? My lord, just to attend the proceedings. So hear them out, don't pass any order. Okay. And if your lordship may turn to the next page, 309. चैलेंज फिर क्या किया था उन्होंने इसमें? Sir, this was the time with the show cause notice. Notice challenge की. Yes. There was no order of the commission. No, my lord. At that, yes. So simple was notice challenge की है. The lordship will see the notice is dated 12/12/2023. That is at page 576. Part 3. If your lordship has the chronology, it's on page 4 of the chronology. नहीं, हम actually देखना चाहते हैं. जी sir. It's at page 576, part 3. ये चैलेंज की थी. जी सर. ये दिखा दें प्रेयर से कि यही चैलेंज किया था कुछ और. If your lordship may turn to the petition, that my lord is there at page 585. The prayer clause at page 590. And the proceedings are being called into question. If your lordship will see. इस शोकॉज का तस्करा कहाँ है? ये तो कह रहे हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करें. My lord, yes, and they are mentioning the proceedings before the ECP, and your lordship will see the first page of the petition. I don't think so, because if you see the date of the petition, this is 9/12/2023. My lord, yes. Your notice is 12/12/2023. My lord, yes. So I don't think this was under challenge. My lord, this was 14/12/2023, page 585. Huh? 585. जी. 585
585 में क्या दिखा रहे हैं? That is not the notice and Yes, that's not. The prayers are all there. 9th of December को इन्होंने फाइल की ना पिटिशन. If your lordship may, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा ये सिंबल दे दीजिए. if your lordship will see, they have thereafter filed a CMA, page 592. They have filed a CMA, which is at page 592. Application from and your lordship will then see at page 594, page paragraph 5. ये इंडेक्स में लिखा हुआ है नोटिस इशूड बाय ईसीपी और यस मतलब यस इंडेक्स में भी है और फिर पेज 594 में पैराग्राफ 5 में भी ये इन्होंने अमेंड नहीं किया मगर दे ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड. They brought it on record. Got it. And if your lordship will see 595, their prayer, they're asking for it to be suspended. And impugned notice be suspended. That is added by hand. अमेंड नहीं करना चाहिए थी. My lord, it ought to have been presented. Application 151. Yes, sir. And it's mentioned in paragraph 5. The notice is mentioned in paragraph 8 again. Got it. My lord. So it's mentioned in 2 paragraphs. वो जो स्टे ऑर्डर्स ऑन दिस इज मैंने देखा वो स्टे ऑर्डर्स में सीएम मेंबर के ऊपर लिखा हुआ है. ये पहली पिटीशन किसने फाइल की थी? ये पेशावर में 5791. शख्स कौन था? My lord, I'll just give it to your lordship in a minute. This is page 585. कौन बंदा था? Sir, it is page 585. Pakistan Tehreek Insaf. नहीं, वो शख्स कौन है? Muhammad. Through its authorized person. वो कौन है authorized person? My lord, if your lordship will see, there is an affidavit with the application at page. Malik Anwar Taj. Malik Anwar Taj, उनका affidavit लगा है 596 and he is also the petitioner number 3. इधर नाम वो हैं क्या नाम है? उमर सेक्रेटरी जनरल इनके कौन है? उमर अयूब सर. इस वक्त तो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे या ये थे? नहीं सर, ये नहीं. मलिक अनवर ताज थे. No, Malik Anwar Taj, my lord, doesn't. He is, as your lordship will see, is vice president PTI KPK. ठीक. बस. My lord, that's it. Thank you very much. Anybody else? Everybody over. और बात तो नहीं है? Khan Saab, Ali, sorry, I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Mahdum Ali Khan Saab and Ahmed Hassan, we all argued very well. I wish you had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. I can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. Thank you very much. जी सुप्रीम कोर्ट में समाअत कंक्लूड हो गई है. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलारी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह समाअत की है. इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है ये और इसका जवाब अब मिल जाएगा क्योंकि समाअत कंक्लूड हो गई है. और समाअत के दौरान बड़े इसका इजहार चीफ जस्टिस ने भी किया कि बड़े तगड़े दलाइल दिए गए दोनों तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से भी और अकबर एस बाबर के वकील ने भी दलाइल दिए. इस सारी समाअत का के बुनियादी जो निकात है वो यही है कि चीफ जस्टिस ने बार बार ये सवाल किया कि जो इंतखाबात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि इसी के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान
निशान वापस लेने का फैसला किया। तो जो भी दलाइल मांगे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बार बार ये पूछा गया कि आपके जो इंतखाबात हुए, इंटर पार्टी इंतखाबात हुए हैं, वो कवायद व ज़वाबित पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं या नहीं। तो PTI की तरफ से जो दलाइल दिए गए, उन्होंने कहा कि हमारे ये इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक भी हुए हैं और जो हालात वाक़यात, जिन हालात वाक़यात में हुए, उसका इजहार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया। खास तौर पर जो इस्तफसार किया, जो सवालात किए चीफ जस्टिस ने और दीगर जजेस ने, उन्होंने यही पूछा, एक तो इंतखाबात से मुताल्लिक पूछा, दूसरा नुक्ता ये कि ये जो अकबर एस बाबर जिनसे मुताल्लिक बात हो रही है और जिन्होंने ये चैलेंज भी किया था PTI इंटर पार्टी इंतखाबात को, तो ये सवाल किया गया कि अकबर एस बाबर आया आपकी पार्टी के रुकन हैं, थे या फिर नहीं हैं, इससे मुताल्लिक कोई सबूत दिया जाए, उनको पार्टी से निकालने का कोई ऐसा सबूत, कोई लेटर आपके पास मौजूद है तो वो बताया जाए। फिर एक जुरिस्डिक्शन का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं थी इस मामले को टेकअप करने के लिए और ये पार्टी के अंदरूनी मामला थे, पार्टी अंदरूनी तौर पर इनको हल कर सकती थी। तो इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेकाक ही नहीं था कि इस मामले को लेकर के कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी इलेक्शन पर और इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान वापस नहीं ले सकता था और ये सुन ही नहीं सकता था ये मामला। दीगर जो मामला थे उसमें फिर नोटिफिकेशन से मुताल्लिक बात हुई कि पार्टी का जो इंतखाबात हुए उसमें क्या नॉमिनेशन पेपर्स दिए गए या नहीं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, नीलम, उनसे डिटेल्स लेते हैं आज। अब्दुल क़य्यूम, इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला अब महफूज कर लिया गया है, क्या PTI के वकला के आज दलाइल रहे? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ से हम जानेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को भी कनेक्ट करें। मरियम, इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या आज PTI के वकला के दलाइल रहे सुप्रीम कोर्ट में? में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वकला ने आज दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुफस्सल दलाइल के बाद जवाब भी सुना इलेक्शन कमीशन के वकील का और फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जो सलूक है, जो बर्ताव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो इम्तियाजी है, बाकी सारी जमातों के साथ ये सलूक नहीं होता इलेक्शन कमीशन का। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन की इतनी तफसीलात में जाए और इतनी डेप्थ में जाके उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को देखे। ये जो सियासी जमातें हैं उनका अपना जो है वो ये काम है और ये उनकी इंटरनल वर्किंग है जिसमें इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर सकता। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिलाई किया आर्टिकल 17(2) जो कि आइन के बुनियादी हकूक में से, उसके अलावा आर्टिकल 25 के ऊपर के इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ यकसा सलूक नहीं कर रहा बाकी जमातों की तरह, और इस तरह उनको जो आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के बुनियादी हकूक है वो भी नहीं दिए जा रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने इंतखाबात करा दिए, जो शर्त थी वो पूरी हो गई और उसके बाद ये कहना कि इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं हुए ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल नहीं था बल्कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है वो ये इंतखाबात कलअदम करार, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन खुद अपने ही ऑर्डर के पर अमल कराने के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकता था। इसके अलावा ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो पावर रिज्यूम की है वो सिविल कोर्ट की या किसी अदालत की से है और इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होती। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो पाकिस्तान इंसाफ के बानी मेंबरान हैं या जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उन सबको भी सुना, अकबर एस बाबर के वकील को भी सुना और जो दीगर इनफरादी हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान अदालत में मौजूद थे उनको सुना गया, जिनका ये कहना था कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाकर नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की कोशिश की, लेकिन PTI की तरफ से उनको ये कहा गया कि जिनको बानी PTI ने मुंतखब कर लिया है वही इंतखाबात लड़ सकते हैं और आप इंतखाबात नहीं लड़ सकते। उसके बाद जवाब हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील का। तमाम दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि कुछ देर में महफूज फैसला सुनाएंगे, अपने साथियों के साथ मुशावरत दरकार है और बेंच अभी जो है वो कर गया है। तकरीबन 9 घंटे की ये आज की समाअत थी। गुज़िश्ता रोज भी मुफस्सल दलाइल सुने गए थे। अदालत ने अभी ये महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाने का कहा है। अच्छा मरियम, ये बताइए कि इलेक्शन एक्ट की शेख 215 का बड़ा जिक्र हुआ और 215 ही को बुनियाद बनाया पाकिस्तान, वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी 215 का ही हवाला दिया गया, अकबर एस बाबर की तरफ से भी। तो इसमें एलिजिबिलिटी से मुताल्लिक, सर्टिफिकेट महज जारी करने से मुताल्लिक क्या बात हुई?
जी, जो आर्टिकल 200 सेक्शन 215 का हवाला दिया जा रहा है वो ये है कि इंतखाबात कराने के बाद जो तफसीलात होती हैं वो तहरीरी तौर पर दस्तखतशुदा इलेक्शन कमीशन को जमा करानी होती हैं और फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो देखता है कि क्या पार्टी ने तमाम तर तकाजे अपने आइन के मुताबिक पूरे किए हैं और उन तकाजों के पूरे होने के बाद इलेक्शन कमीशन ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं इनको दुरुस्त या गलत करार देता है। तो यही बहस यहाँ पर रही। अब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन को गैर मौसर कर दिया है, उनके इफेक्ट को खत्म कर दिया, ये हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं था। हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज करके इलेक्शन एक्ट की शिकों को जो है वो उनकी तशरीह की। उनका ये कहना था कि अदालतों के पास इख्तियार ये है कि या तो वो कानून को गैर कानूनी या कलअदम करार दे सकती है या फिर उनकी इंटरप्रिटेशन के मामले को जो है वो पार्लियामेंट वगैरह पर छोड़ा जा सकता है। अदालतों के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी जो कानून या आइन की कोई शिक है उसको गैर मौसर कर दे। ये इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था। इस पर अदालत ने भी ये कहा कि वो जो हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से बाहर जाके सेक्शन को इंटरप्रेट किया है उस पर ऑलरेडी जो पीटीआई की जानिब से जो प्ली ली गई है उससे अदालत ज्यादा जो है वो मुतासिर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने यही कहा कि हाई कोर्ट ने कैसे इलेक्शन एक्ट की किसी शिक को जो है वो रिडंडेंट करार दे दिया है या उसको एब्सर्ड कह दिया यानी बुरा कह दिया है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील है उनका भी ये कहना था कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। अब देखना यह है अदालत ने कि वो हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखती है या फिर उसको जो है वो कलअदम करार दिया जाता है या उसको मुस्तरद किया जाता है। तो फिर जो तमाम तर ये चीज है उस पर वो डिटेल रीजनिंग में आएगी। फिलहाल जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है कि वो फैसला दुरुस्त था, गलत था या फिर जो पीटीआई है उसको किस तरीके से उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट देखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुफस्सिल तरीके से तमाम तर तफसीलात देखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक। तो अभी जो अब से कुछ देर बाद अगर ये फैसला सुनाया जाता है तो फिर इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आया बल्ले के निशान के लिए अहल है या नहीं। चीफ जस्टिस ने बार बार ये कहा है कि हमारे सामने मामला इंतखाबी निशान का नहीं इंतखाबात का है। अगर इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक हुए हैं तो फिर जो तमाम तर उसके बाद जो बेनिफिट्स होते हैं वो पीटीआई को मिलेंगे, यानी जिनमें बल्ले का इंतखाबी निशान भी आता है और उसके अलावा भी जो दीगर पार्टी के राइट्स हैं वो उसको मिलेंगे। लेकिन अगर इंतखाबात ही दुरुस्त तरीके से नहीं हुए तो फिर जो है वो अदालत को ये सोचना होगा कि और ये देखना होगा कि पीटीआई अहल नहीं है तो कैसे नहीं है। इसके अलावा जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है फिर जो जी मरियम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मरियम को हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बड़ी मुफस्सिल आज समाअत रही सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन की अपील पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है, कुछ देर में सुनाया जाएगा। आज चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क सामने आए इस केस में। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई ये तो नहीं कह सकती कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं या नहीं, हमारी मर्जी, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस में आज चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई, किसी और को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये बात वाजे हो गई कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे लेकिन फिर आपने आइन बदल लिया। मरियम नवाज हमारे साथ फिर आ गई है। मरियम, ये जो एक बुनियादी सवाल चीफ जस्टिस की जानिब से रखा गया कि तमाम पार्टी अरकान को यकसा मौका मिला या नहीं, इस पर पीटीआई के वकला के क्या दलाइल रहे? पीटीआई के वकला का ये कहना था कि तमाम जो उनके सियासी पार्टी के हिस्सा मेंबरान हैं उनको तो यकसा मौका दिया गया, लेकिन जो लोग यानी अकबर एस बाबर समेत दीगर जो 14 अरकान इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ वो पीटीआई के मेंबरान नहीं है और उनको पीटीआई निकाल चुकी है। चीफ जस्टिस सादिक फरीदा ने जो अकबर एस बाबर समेत जो मेंबरान के टर्मिनेशन लेटर है पार्टी से उनको जो है वो दस्तावेज मांगे तो वो दस्तावेजात पीटीआई अदालत के सामने नहीं रख सकी। सुबह से बार बार चीफ जस्टिस ने यही कहा कि अगर आपने किसी अपने बानी मेंबर को पीटीआई से निकाला है, निकालने के कोई दस्तावेजी सबूत है तो वो अदालत को दिखाएं, लेकिन वो अदालत के सामने पेश नहीं किए गए। यही पीटीआई की जानिब से कहा जाता रहा कि उनके दस्तावेजात के जो दफ्तर है वो लॉ के वो अदालत के सामने चीजें नहीं रख सकते। चीफ जस्टिस ने बार बार ये कहा कि आपके जो अपने मेंबरान हैं यानी जैसे अकबर एस बाबर के ऊपर कोई ये शक नहीं है कि वो पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से नहीं है, तो फिर उनको इंतखाबी अमल में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया गया। तो इस पर जो बैरिस्टर अली जफर है पीटीआई की जानिब से उनका ये कहना था कि अकबर एस
बाबर जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए आए तो उनको मुकम्मल मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो फी थी 50,000 की जो जमा करानी थी नॉमिनेशन पेपर्स के साथ वो नहीं दी, इसलिए जो है वो उनको नहीं पार्टी के इलेक्शन में कंटेस्ट करने दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो लेट आए, उन्होंने क्योंकि एक ही दिन दिया गया था जब नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो लेके जमा कराने थे, तो वो उन्होंने अपने मखसूस वक्त में नहीं कराए। जबकि अकबर एस बाबर के वकील का ये कहना है कि उन्होंने कोशिश की, वो पीटीआई के सेक्रेटेरिएट गए जो इस्लामाबाद में कायम किया गया है, लेकिन उनको ये कहा गया कि जिन जिन लोगों को बानी पीटीआई की जानिब से सेलेक्ट कर लिया गया है या जिनको इजाजत दी गई है वही लोग इंतखाबात लड़ सकते हैं। उसके अलावा पीटीआई की जो दीगर भी यहाँ पर जो उनके कुछ अरकान है जो कि दावा करते हैं कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना चाहते थे, उनको मौका नहीं दिया गया। तो ये जो तमाम तर दलाइल थे आज अदालत के सामने रखे गए। चीफ जस्टिस सादिक फरीसा ने कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो पीटीआई के मेंबर्स हैं, इंतखाबात भी लड़ना चाहते हैं, तो पीटीआई खुद क्यों अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं लाती। उन्होंने ये कहा कि आपको ये नहीं हो सकता कि आप अपनी जमात के अंदर डिक्टेटरशिप करें लेकिन बाहर आपको जमहूरियत चाहिए। तो अब इस पॉइंट के ऊपर भी अदालत ने तय करना है। जब तमाम तर मेंबर्स ने आकर अदालत के सामने ये बताया कि वो पीटीआई के रुकन है, तो उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन दूसरी जानिब से और अदालत की जानिब से रेज नहीं किया गया। तो अब फैसला इस चीज पर भी होगा कि जो दायरा इख्तियार था इलेक्शन कमीशन का वो बनता था या नहीं, या ये जो मेंबरान है इनका हक दावा था या नहीं। ठीक है, बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज कर लिया गया है। मुतवक्के तौर पर अब से कुछ देर में फैसला